Assalamu alaikum and welcome back, ladies and gentlemen, to another episode of Cricket Mehfil. I'm your host, Behram Qazi, and as you all know, the group stages of the PSL 7 have concluded. और अब हम playoffs की तरफ जाने वाले हैं, तो आज हम उसको जरा preview करेंगे with, of course, our resident host at Grassroots Cricket and fan favorite, Nawab Hassan Hussain Qureshi. Hassan bhai, how are you doing and how much did you enjoy that group stage? Always good to see you, Behram. What a fun game. Dead rubber PSL में हो ही नहीं सकता भाई. आखिरी मैच को भी सुपर ओवर तक लेके जाएंगे और मैं आपको बताऊं लाहौर के क्राउड को जितनी दाद दे कम है. Really, the Lahoris have really been spectacular. The way they were there, जो crowd का मजा था. शाहीन शाह अफरीदी ऑल राउंडर, ठीक है ना जी. बॉलर को छोड़े, आज से पहले करियर में 4 छक्के, आज एक मैच में ही 4 छक्के. Had everything. There's no dead rubbers in the PSL. Really loved it. Really enjoyed it. ठीक है, mathematically इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, but I think it's a good way to take a couple, or at least a day's break, and it'll keep us all really looking forward to those next games. Absolutely, I concur word for word, especially जो आपने बात की ना, no dead rubbers. We've seen a lot of close games in this PSL. I think we've seen more close games than we've ever seen. I might be wrong, but इस तरह की feeling जरूर आई है. And today's game was just it blew everyone out of this world, like a super over, and that too in a game जहां पे लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स आराम से हार जाएगी and Peshawar has this in the bag. और मुझे याद है कोई 42 रन चाहिए थे 3 overs में, and it was all Shaheen from there on. Hafiz got out और आपको लग रहा था कि कहां होंगे इनसे 24 in the last over, but he got 23. He basically channeled his inner Shahid Afridi, I would say, and the legacy continues for number 10. And I just love the way he finished with the Starman celebration as well. So lot of nostalgia over there, and I just love to see the way Shaheen is grooming and maturing into the cricketer that he is today. And there's still such a long way to go. ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है हसन भाई. इसकी कप्तानी कितनी इंप्रेसिव रही है इस सीजन. शुरू में थोड़ी गलतियां करा था, but उसके बाद the way he's rallied his men, जिस तरह वो बैक करता है, जिस तरह वो जज्बा देता है, and it's just the Lahore Qalandars environment in total, I would say, all over. It's just so infectious. There's so much love and bromance going on. So I feel like that's the place we should start first. Lahore Qalandars की बात करते हैं इस preview में सबसे पहले. और ये एक ऐसी टीम है हसन भाई जो historically, they've been the butt of all jokes. Let's be honest. मगर कुछ सालों से इनने अपना core मजबूत किया है और इस दफा they're looking like proper contenders. Yes, losing Rashid Khan is going to be a big blow for them. Of course, आप राशिद जैसे प्लेयर को as such replace नहीं कर सकते because he brings a lot to the table, more than most people in the world. और आज हमने देखा कि फवाद अहमद को उन्हें खिलाया, and even though फवाद was good, बैटिंग डेप्थ में अब वो थोड़ा लैक कर रहे हैं. उनकी टेल जरा लंबी हो गई है, which could be an area of concern, and it might make them play Samit Patel in the playoffs. ये तो खैर अब देखना पड़ेगा वक्त के साथ. If they do go with Fawad, that would be a very attacking option and brave. But I've been super impressed with Shaheen's captaincy. You've got some absolute superstars in this team still, in Shaheen Shah Afridi himself, Haris Rauf, Fakhar Zaman, who has had the season of his life. मेरे तो ख्याल से he has a very good chance of breaking Babar Azam's record tally of 550 something runs, which is the most in one single edition of the PSL, and Fakhar still has a few games to go. तो मुझे तो लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स, वैसे I would put them on an even keel with Multan, but now that they've lost Rashid Khan, मुझे लगता है थोड़ा झटका उनको जरूर लगेगा, and it is very unfortunate, but they still have that team chemistry and bonding and the momentum to go and win the whole thing, because today, even though they lost in that super over, जो उनको confidence और belief मिल गया होगा शाहीन को का जिस तरह आखिरी ओवर में जिस तरह उसने खेला, उससे I think जो उनको जज्बा मिला होगा, and their whole momentum and spirits will be lifted tenfold. What do you have to say? Absolutely, Behram. और देखें जो भी हो, सुपर ओवर in the long term inconsequential रहा. आखिरी बॉल पे 6 मार के मैच को टाई करना, the confidence that comes from that, the confidence जिस तरह आपने कहा, वो quietly खुश होंगे फवाद के परफॉर्मेंस से. Like you said, Rashid is irreplaceable. बट जो हमने पिछले 2-3 दिनों से देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने उनके टीम बॉन्ड की जो आप बात कर रहे थे, उनकी एनवायरनमेंट की, देखें, they may have been the butt of all jokes. हम सब ने लाहौर कलंदर्स का मजाक उड़ाया, but I think इस टाइम पे we all fear them a little bit, and I think we all respect them. जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो उन्होंने एक कैमराडरी बनाई है, जो लाहौर कलंदर्स का एक तरीका है. I think they're easily the most liked team this time around. Even I know हमारे वो लाहौर कराची के जोक्स चल रहे होते हैं, मजाक चल रहे होते हैं, मुल्तान वाले और लाहौर वाले एक दूसरे को हम जिंक्स कर रहे होते हैं.
but they're really liked, and I think it has a lot to do with the way that they've presented themselves. जिस तरह के हम उनके प्लेयर्स को देखते हैं, शाहीन की कप्तानी हो गई, राशिद हो गए, वो पश्तो में उनके जोक्स चल रहे हैं. हमने अभी आज हमने हारिस में थोड़ा सा फायर देखा, थोड़ा सा हमने हारिस में देखा कि उनको भी अब वो आ रहा है. तो लाहौर वोंट माइंड टुडेज लॉस, सो टू स्पीक. सुपर ओवर में उनको इतनी टेंशन नहीं होगी. राशिद विल बी अ बिग मिस, बट आई थिंक लाहौर विल बैक देमसेल्व्स. अभी तो हमने बहराम, we've not seen the best of David Visa. तो मुल्तान को तो उन्होंने मारना ही मारना है भाई. उनकी पुरानी दुश्मनी है हमारे से. मैं हर दफा यही कहता हूँ, उन्होंने हमारे ऊपर हमारे साथ कोई तशद्दुद करना है, हमें को 5 छक्के एक ओवर में मार के कुछ करना है. And Samit Patel might be a very good pick considering कि he is a very experienced pro. He bowls, he bats, he's good in the field. I know लोग उनके weight की बात करते हैं, but his record speaks for itself. And like you said, Fakhar has had a couple of bad games. Fakhar will be there or thereabouts. Lahore really are looking good and they're contenders. And even if I feel Lahore, Multan को शायद दोनों टीमों को एक फायदा हो कि even if they God forbid lose the game, उनका कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है हम अगला मैच तो जीत के ही वापस आएंगे. There's that अंग्रेजी में जो बाउंस बैक एबिलिटी हम कहते हैं. तो आई थिंक दोनों टीमें खुश होंगी. एंड देखें Baram, one thing Lahore has that nobody has, we can complain about whatever, but the Lahori fans have been amazing. They have been amazing. The crowd has been electrifying. I keep getting pictures from friends जो matches पे जा रहे हैं, लोग share कर रहे होते हैं. It's been brilliant. It's been brilliant. Lahore have that 12th man. और अगर लाहौर ने गेम पकड़ ली तो आपको पता है they're going to support them. And yes, long tail. आज स्ट्रेस लगा हुआ था कि टेल इतनी लंबी है, बल्कि मैं किसी को कह रहा था कि आई वाज टेलिंग दानियाल यार उनकी तो टेल बहुत लंबी है. वो टेल वाले नहीं आके 33 मार के 4 छक्के मार दिए. So maybe they don't believe they have a long tail. Lahore are looking good, Behram. They're looking good for it. आपने बड़ी अच्छी बात की 12th man की, because the crowd really has been absolutely insane and you just absolutely love to see it. Like यही तो हम चाह रहे थे पता नहीं कितने सालों से कि इस तरह का crowd आए PSL गेम्स में और होम टीम को इस तरह सपोर्ट करे. And even as a neutral, everyone enjoys it. Everyone loves the Lahore Qalandars. They're just such a lovable team. Like I mentioned the bromance earlier, and then I even tweeted about this, Hassan bhai, but that guard of honor that they gave Rashid Khan after his last game, that's just so wholesome. And the amount of respect they have for Rashid and the way he responds and reciprocates that love, मुझे तो बहुत मजा आता है देखने का. मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा हसन भाई, that फखर जमान जब नहीं चलते तो it seems like Lahore find themselves in a bit of a pickle. उनको थोड़ा मसला हो जाता है इनिंग्स को आगे लेकर जाने में, और ये शायद उनकी एक कमजोरी हो सकती है. क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एक कमजोरी होगी और इसको टीम्स टारगेट करेंगी. उनकी कोशिश होगी किसी तरह के फखर को आउट करने का. वो अलग बात है कि फखर ऐसी फॉर्म में है कि नहीं लगता कि हर दफा आउट होंगे. गुड नॉक बाय द प्रोफेसर टुडे, राइट टाइम फॉर हिम टू फाइंड सम फॉर्म. बट फखर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बट देखिए मेहराम, हमने लास्ट मैच में भी कहा था फखर जल्दी आउट हो गए, और हैरी ब्रुक ने तो जो नॉक खेला, दैट वाज अनबिलीवेबल. जिस तरह उन्होंने वो इनिंग्स खेली, तो आई थिंक कलंदर्स थोड़े से कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ अगर ना चले फखर, वी हैव इनफ पीपल जो कर सकते हैं. आज हमने थोड़े से फिल सॉल्ट से भी थोड़ी सी ज्यादा अग्रेशन देखी, उनको ऊपर आके खेलते हुए देखा. बट ऑब्वियसली जब फखर चलते हैं और जिस तरह उन्होंने ये टूर्नामेंट खेली है, जो उनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं, आई थिंक दे विल वांट हिम टू डू वेल एंड टीम्स विल बी वरीइंग अबाउट फखर जमान. दे विल बी टारगेटिंग हिम. वो सोच रहे होंगे फखर को आउट कर लो. वो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो फखर से तो डील नहीं करना. बट उनका ओवरऑल लाइनअप अभी भी काफी स्ट्रांग है लाहौर का. इट इज अ वरी इफ यू गेट फॉर लाहौर इफ फखर गेट्स आउट, बट आई थिंक दे हैव इनफ इन द टैंक टू still do well. I'm glad you brought up Harry Brook because that was a magnificent 100 and that's what the PSL really is, Hassan bhai. मेरे हिसाब से PSL हमेशा से ना एक optimal breeding ground रहा है for talent all across the world जो यहाँ आकर perform करें, अपना लोहा मनवाएं, and then they have a shot at playing for their national teams. And England will have their eyes set on Harry Brook क्योंकि जिस तरह उसने अपनी innings construct की, he got his 100 off 48 balls or something, which is phenomenal, really. And it gives the entire team confidence. वही आपकी वाली बात कि चलो फखर ने ऊपर से नहीं किया तो नीचे से आकर कोई कर सकता है. One last question, of course, हमने ये तो बहुत दफा बात की हुई है कि Lahore have arguably the best bowling attack in all of franchise cricket. So I'm not going to waste a lot of time over there. वो तो मेरे ख्याल से काफी obvious सी चीज है, and most people watching this will also agree. But एक मैं आपकी जरा, I want to pick your brain in one particular area, Hassan bhai. Dropping Abdullah Shafiq for Sohail Akhtar.
I'm not sure if that is a move that is good for them in the long run, especially given how successful Shafiq had been in the earlier part of the tournament. So, क्या ख्याल है आपका? Should they go back to opening with Shafiq, or do you think Suhail Akhtar in the lower order makes more sense? No, I would agree with you. हमने कहीं पढ़ा था कि Abdullah had a bit of a niggle, so I think they've rested him rather than dropped him, Right. and they should have him. I think Abdullah, Fakhr, and Kamran was working for them really well. It was lovely to see तीनों Pakistani batsmen. Suhail Akhtar has been a good servant of Lahore Qalandars बड़े अरसे से, but I don't think आप उन पे वो expectation डाल सकते हैं. और एक तरह से आज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट एक तरह से टीम्स को वो शायद फीलिंग हो जाएगी कि ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया के ऊपर खेल रहे हैं, थोड़ा अपने पास्ट reputation पर खेल रहे हैं. They really, if Abdullah is fit, I would like to see them try him. And if Abdullah is not fit, and अगर एक जगह बनती है कि वो एक extra overseas player खिला लें, तो they would still be better served taking Samit Patel. हमने कुछ worryingly wickets में देखा है कि कुछ ज्यादा spin ले रही हैं, थोड़ी low and slow रही हैं. I hope जो आखिरी 2-3 मैचेस की विकेट्स हैं उनमें जरा बाउंस हो, and they're wickets that are conducive to run making. You know, the Multan और इस्लामाबाद वाली game में भी the pitch was not taking away anything from those players who bowled well. But you'd like to see pitches with a bit more carry, bit more bounce to them. And I would also like to see Abdullah back. I think we will see Abdullah back. I don't think Suhail Akhtar is the answer. Chale, perfect. And of course, we've seen Mohammad Hafiz roll his arm too. Kamran Ghulam as well. आपने बात की कि wickets थोड़ा turn ले रही हैं. तो बहुत ज़्यादा variety है लाहौर के पास, I feel, in their bowling attack, even after Rashid has left. क्योंकि आपके 8 ओवर तो शाहीन और राउफ निकाल देंगे. और उसके बाद भी, there are a lot of people who can plug those holes, like David Visa, Mohammad Hafiz, potentially Kamran Ghulam, and Samit Patel if he plays. So I think इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो उतनी हर्ट शायद ना हो जितनी दुनिया को लग रहा हो. ऑफ कोर्स यू विल फील द मैसिव होल दैट राशिद हैज लेफ्ट, बट सम अदर पीपल माइट बी एबल टू प्लग इट. एंड एंड ऑफ द डे, लाइक वी सेड अर्लियर, द एनर्जी दैट दे ब्रिंग टू द टेबल, दैट camaraderie जो आपको टीम में बॉन्डिंग नजर आ रही है, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर द कलंदर्स. एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक आई वुड से that they would make the final for me. I would be very disappointed if I don't see the Qalandars in the final. What do you say? Yeah, I would agree. I think they'll make the final. Whether they beat Multan or whether they have to play anybody else and get there, Lahore are looking like very likely finalists. You would imagine that Lahore will make the finals. Perfect. Chale, let's move on to the other team that was playing today, the winning team, Peshawar Zalmi. Hassan Bhai, Peshawar has a knack of peaking at the right time. We've seen them do this PSL after PSL after PSL. And yet again, after 6 games, they had 2 wins and 4 losses. And then, as always, they win 4 on the bounce. Now they have 6 wins out of 10, and they find themselves in the playoffs. Wahab Riaz had a very poor start to the PSL, but with every game, he's only gotten better. I rate him a bit as a captain as well. I think he's led his troops well. He's marshaled them to quite a good effect. थोड़ा सा मैं ये कहूंगा पेशावर का कि even though उनका बड़ा अच्छा रन जा रहा था, and they've unearthed an absolute superstar in Mohammad Haris, जिस तरह confidence से आकर वो खेलते हैं, he backs his ability and he wants to show the world that he is the best. No puns intended. I do feel like losing Rutherford and Livingston will really hurt them because middle order उनका खासा कमजोर हो गया है, and today you saw them field pretty much an all Pakistani lineup minus Hazratullah Zazai, who hasn't been in form at all himself. तो पेशावर के अंदर मुझे कुछ holes नजर आते हैं, but they are riding that momentum, and I don't know. I think that, given Islamabad finds themselves in a very difficult position right now, I would say they do start that game as favorites. Yeah, Behram, they do start as favorites. Also, I think today they were happy to rest Ben Cutting. Benny Howell has joined them. He's had a very good BPL. उन्होंने वहां पे अपनी बैटिंग से भी अच्छा किया और उनकी बॉलिंग भी इन कंडीशंस को सूट करती है. मिक्स अप करते हैं बड़ा स्लोअर बॉल्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. So I think that's a good decision. Shafeen Rutherford is a loss. Liam Livingstone is a loss. But Peshawar की जो एक चीज is working for them कि their pace battery जो है, उनकी जो pace bowling attack है, आज भी ठीक है, उनको end में runs पड़ गए. But Mohammad Umar was steaming in. We saw the fast bowlers bowling really well. Experience है, शोएब मलिक का experience है वहां पे. वहाब रियाज मैं आपसे बिल्कुल agree करूंगा. Not only has he improved as a bowler, हर गेम में उनकी कप्तानी में भी बहुत improvement आई है. वो लाहौर आके he's crossed that 100 wicket mark, the first man to do so in PSL. Deserves a lot of respect, Vicky bhai. And जिस तरह he's bowling in his home city, जिस तरह he's going out there and performing, I think Peshawar will be quietly confident, especially considering कि it's been a bit of a mixed bag for Islamabad. उनके अपने issues चल रहे हैं,
तो they would feel comfortable. What a worry will be for Islamabad is जिस तरह, sorry for Peshawar, जिस तरह आपने कहा कि जब वो अगले मैच को अगर इस्लामाबाद से जीत के जब वो मुल्तान या लाहौर को खेलते हैं, वहां पे थोड़ा सा डर लगता है कि उनके पास they will miss those players. They'll miss Rutherford. They लगता है they'll have to continue with Zazai, but he's nowhere near in form. And I think आज थोड़ा सा feeling आई है कि हारिस को टारगेट करना पड़ेगा with high pace, which is something जो कि हर टीम के पास मौजूद है. So हर टीम ट्राई करेगी. I wouldn't even surprise me अगर इस्लामाबाद ट्राई करते हैं, because he's had a poor tournament by his own standards, Martian Telanga, कि उनके साथ थोड़ा सा हारिस को आकर रफल अप करें. तो अब मैचअप्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. पेशावर कॉन्फिडेंट होगी, लाइक यू सेड, दे ऑलवेज फाइंड अ वे. दे 4 wins on the trot. Big super over win today. They would have felt कि पहले ही जीत जाते. And Peshawar is hurting from last year, I feel, you know. So they would want to correct it. And देखिए Bahram, something that's really worrying me as a Multan fan is the fact कि पिछले 3 tournaments में जो team first finish हुई है, they've not always gone on to win it. So Multan was that team last year. Peshawar और Islamabad could well be that team this year, even though Islamabad का injuries के फर्क पड़ा है. But yeah, Peshawar will be quietly confident. I think जो उनके पास replacements आ गए हैं, उससे भी खुश होंगे. They've done well, and they will believe that they have more depth than Islamabad going into that game. बिल्कुल. और हसन भाई, कितना फर्क पड़ता है ना when your captain is performing and leading from the front. Now Wahab Riaz comes and bowls that over in the super over, like it was absolutely unplayable, you know. Yorker length and reverse swinging in, and he has so much experience के वहां पे कोई भी खड़ा होता ना, उनको बहुत मुश्किल होती वहाब को उस ओवर में मारना. एंड आई थिंक उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कप्तान परफॉर्म कर रहा है. और उसके ऊपर आप देखें, आज यू सॉ अर्शद इकबाल मेक हिज डेब्यू for Peshawar Zalmi. He was impressive. He got 2 wickets, I think, very 30 odd in his 4 overs. We've seen Umar shine on occasion. We've seen what's his name, Salman Irshad, play really well in this tournament. In fact, Babar Azam couldn't get him away at all, and he's been really good at the death for them. Then, you know, Usman Qadir has been hot and cold, but I feel like, you know, he is worth playing in that playoff game because, as you said earlier, the wicket does tend to take a bit of spin, and you don't have Liam Livingston anymore. So I think that Peshawar, you know, they have all that it takes in that team. ठीक है, कुछ ना कुछ holes जरूर होंगे उनके, but you've got talents like Mohammad Haris, who's been, I would say he has been the find of this PSL. I would just easily put him ahead of Zaman Khan. थोड़ा सा ऊपर रखूंगा Zaman से उसको, because जो belligerence नजर आई है ना, और जो sheer audacity नजर आई है, जिस तरह उन्होंने आकर मारा है, और even those premeditated shots all across the ground, and the way he's pulled and hooked, like I was hooked to the screen watching him bat, and it was just phenomenal hitting. I think they have that momentum, they have that team spirit. Haider Ali ka, we haven't seen the best of Haider Ali yet. You never know, he might fire in the playoffs. So I would say that Peshawar definitely start as favorites in that game versus Islamabad. They're going to get a lot of confidence from Wahab's performance and the other fast bowlers. They are in good nick now as well. शुरू में हमें लग रहा था कि weakness है इनकी है, मगर they worked on it. Or Hashim Amla, of course, you've got him in the dressing room. Mohammad Akram has been with this team since the very start. You've got an aging core, but still the same core. And like you said, they're hurting. So they would really want to go one better from last PSL. And just like, you can never, ever write the Peshawar Zalmi off. No, you can't. And also देखिए मेराम, हम काफी दफा इस पे बात करते हैं कि हमने मुल्तान में देखा है और हमने लाहौर में देखा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग कोर है प्लेयर्स का केपीके से, जो डोमेस्टिक लेवल पे बड़े सक्सेसफुल हैं. पेशावर के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोर ऑफ प्लेयर्स है जो लाहौर की कंडीशन से वाकिफ हैं. उस्मान कादिर अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे. आई वुड नेवर राइट उस्मान कादिर ऑफ एट द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर. उनके वालिद साहब की एकेडमी लिटरली 5 फुट दूर भी नहीं है वहां से. वहीं पे बड़े हुए, वहीं पे उन्होंने सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट देखी, खेली. तो ही इज अ बिग गेम प्लेयर. उस्मान बिग गेम में परफॉर्म करेंगे. एट पेशावर ही इज द मेन गाय. मुल्तान में लास्ट टाइम ऑफ कोर्स इमरान भाई भी थे और वो भी थे, और शोएब मलिक को आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते. यू नो, अ प्लेयर विद सो मच एक्सपीरियंस, अगेन नॉट फ्रॉम लाहौर बट एरिया को जानते हैं. कामरान अकमल, लाहौर को वहाब रियाज. तो आई थिंक ये लोकल नॉलेज, कंडीशंस का, प्लेइंग कंडीशंस का, वेदर कंडीशंस का, उन सारी चीजों का पेशावर को काफी हैंडी आएगा. एंड डेफिनेटली यू कैन नेवर राइट देम ऑफ. और देखें, मोमेंटम अब उनके पास है. मोमेंटम है, उन्होंने 2 गेमें जीतनी है पोटेंशियली टू विन द ट्रॉफी अगेन. एंड बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस साल भी जब वो जीते थे तो उसमें भी काफी बैड लक रहा था दूसरी टीम के लिए, प्लेयर्स के आने ना आने से चीजें. सो दे वांट टू विन इट आउटराइट, एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग गुड टू. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट बैराम, कि आई थिंक एनी 4 of these teams can win it, and they're all so closely matched, and that's why we've seen इतने करीबी मैचेस देखे हमने.
और एक जबरदस्त स्टैंडर्ड रहा है PSL का कि इन चारों टीमों में से आप एक को, आई नो मुल्तान की हम बात करते हैं, लाहौर की करते हैं, बट नॉकआउट गेम में अगर आप इस्लामाबाद और पेशावर को राइट ऑफ कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। बिल्कुल चारों टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त है, जितने कोई प्लेयर्स गए या नहीं गए, एंड होपफुली हमें अब वो रिप्लेसमेंट्स भी नजर आएंगी, इंजरीज की भी आसानी होगी। तो या आई थिंक द स्टार्ट इज फेवरेट्स एंड दे विल बिलीव दैट दे आर ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म राइट नाउ। We've talked about their strengths. We've talked about their weaknesses of how they might fare a bit not as well against Multan or Lahore, losing some of their key players or combination shayad thoda disturbed ho. One last closing question that I have for you, Hassan Bhai. You mentioned Shoaib Malik, and this is a guy who gets a lot of stick on social media for not retiring, and you've seen him pretty much ace this PSL. I think he's by far been the best middle order batsman that we've seen on display in this PSL. और वो तारिक सईद ने शायद कहा था, आई थिंक नेशनल T20 में, कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा, और ये दर्जी तो बस सीता ही जा रहा है. ही इज शटिंग अप हिज क्रिटिक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. एंड वहाब रियाज टू, उनने बार बार ये बात मेंशन की है कि शोएब भाई का टीम में होने से बहुत फर्क पड़ता है. ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस, जो माहौल होता है, जिस तरह वो लड़कों को काम करते हैं. Do you think Shoaib Malik would really want that PSL in his kitty, because he's never won it? He will, and knowing Shoaib bhai like I do, having worked with him at Multan, he's very competitive. He's a winner. I know वो बड़े काम रहते हैं तो लोगों को लगता है, but he really wants that. उनकी आप recent पाकिस्तान की success देख लें तो उसमें भी उनका हाथ है. He has also bowled very well, Behram, during the power play. पेशावर को उन्होंने एक और ऑप्शन दे दी है अपनी बॉलिंग से, और उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी रहती है. एंड जिस तरह वो मुल्तान के खिलाफ थोड़े अनलकी थे खेलते वक्त कि जब उनकी बॉलिंग पे इतने कैचेस ड्रॉप हो गए थे, तो हमने उनसे थोड़ा गुस्सा भी देखा जब उन्होंने शानी को आउट किया. तो बिल्कुल परफॉर्म्ड, यू नो, व्हाट डू दे से, एन ओल्ड हेड इन द मिडिल ऑर्डर, गाय जो काम रखेगा. एंड हमने फिर देखा है कि इस PSL में स्पिन has a big part to play. तो शोएब भाई तो स्पिन को बड़ा डोमिनेट करते हैं. तो पेशावर वुड लव द ऑप्शन इफ दे टेकिंग ऑन अ टीम लाइक मुल्तान और इस्लामाबाद, जो कि स्पिनर्स पे बड़ा रिलाय करते हैं, कि शोएब मलिक जैसा एक प्लेयर वहां पे हो जो कि स्पिन के खिलाफ बहुत एक्सेल करते हैं, स्पेशली विद हिज हिटिंग. And you're right. Last time around, you know, he said we'll finish the job. I think this time around he will be thinking to make it back to that final and finish the job. He's a proud man. He'll want to do it. Absolutely, and I don't think there's a better player of spin in Pakistan, especially coming down the ground, than Shoaib Malik. And you mentioned how good and useful he has been with the ball. उन्होंने शर्जील को भी पहले ओवर में आउट किया था एक गेम में, and then not to mention a fox in the field. At 40 years old, he makes everyone else look bad. So he definitely brings a lot to the table, and I think Peshawar को इससे बड़ा फायदा होएगा. Quickly then, Hassan bhai, before we move on to the next team, Peshawar Zalmi to make it to the other qualifier, but not to the final. What are you thinking? I think to make it to the other qualifier and maybe even the final, Peshawar Zalmi is strong enough. Definitely. उनको write off करना, अगर हार भी गए तो जरूरी नहीं है. बिल्कुल compared to the other two teams इतने strong नहीं लगते, but Peshawar are deceptive like that. और मैं आपसे ये कहूंगा बहराम कि हम लोग पाकिस्तान में मजाक करते हैं कि लोगों के आईडी कार्ड चेक करें, उन्होंने एज कम लिखवाई होती है. शोएब भाई का चेक करना पड़ेगा, उन्होंने शायद ज्यादा लिखवाई हुई है, मे भी 5-6 साल छोटे हैं. सो नहीं, बिल्कुल. और मेरे तो हिसाब से आपकी बात ठीक है कि they could even make the final, but for that, Hassan bhai, they're going to have to field well. Now they've been the worst performing fielding side for me in this tournament. और अगर मेरे ख्याल से वो बस फील्डिंग अपनी बिल्कुल अच्छी कर लेना, they have every chance of making the final. Definitely, fielding is a concern, and today was another very bad effort. Surprising, because Peshawar generally बड़ी एक अच्छी fielding unit रही है. I think Zazai तो आज बहुत struggle कर रहे थे, तो they will really want to fix that, because आप afford नहीं कर सकते, especially with the conditions, possibility of dew, other things. आपको अपनी fielding effort और भी बेहतर करनी पड़ेगी. If they don't do that, I think Peshawar की losses में ही fielding का बड़ा हाथ है. So they'll want to fix that issue for sure. बिल्कुल. चलें, moving on to the capital city. Pre-tournament favorites, even in our last video, we thought that they're going to peak in Lahore और वो बस एक run पे जाएंगे, but that didn't quite happen, and the two-time champions find themselves in a bit of strife. Maybe that's an understatement, a bit, क्योंकि after their 7 games, उनकी 4 victories थी and 3 losses थी. Then they lost a lot of players. Alex Hales left, citing bubble fatigue. Colin Munro, I think, broke his wrist. You lost Zishan Zamir right after he dismissed Babar Azam with an absolute jaffer. Shadab Khan, the tournament MVP up until that point, you know, अभी तक उनकी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा wickets हैं at 17, और वो कब से खेले भी नहीं है. He's only bowled in 6 innings.
वो भी चले गए. Fahim Ashraf pulled a hamstring. They've been losing players like anything. और इस वक्त तो I think Asif Ali even said ये बड़ी मुश्किलों से हमने टीम बनाई है. You look at players who play in the lower order traditionally like Danish Aziz come up in the top order. I feel for Mubassir who's had to open, and now they've also lost Rahmanullah Gurbaz, जो बीच में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी ना उनको, उसने आकर बहुत मारना शुरू कर दिया था ऊपर से, and he had found a bit of form. They've lost him as well. Marshawn Delanga has not been playing too well for them. Hassan Ali has been dropped from this team, and I think they're going to have to play him in the playoffs for sure. Then you've got someone like Wasim Jr., who had such a promising start to his T20 career, and now he's experiencing his first dip. And especially in, I think, the last or second last game they played, he was just ripped to shreds, absolutely ripped to shreds by Mohammad Haris. I think 2 overs में कुछ 39 runs दे दी थी वसीम ने, and उनको भी टॉप ऑर्डर में भेजकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. पूरा का पूरा टीम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया. This was a team which had absolute champions in it, जिनका एक टॉप ऑर्डर टू फियर था in Sterling, Hales and Munro. कुछ बातें हो रही हैं कि ये शायद वापस आ जाएं, but I don't think इतना कुछ हो पाएगा because time is limited और आपको क्वारंटीन भी करना पड़ता है. I feel for Islamabad because I'll be quite honest with you, I don't even think right now that they are good enough to compete in this eliminator. And that, I never thought I would be saying that. And Hassan bhai, let's be honest, Islamabad United's bowling has not been up to par if you compare it to other teams in this PSL. मुझे तो नहीं लग रहा कि वो पेशावर को हरा पाएंगे, but of course cricket is a funny game and anything can happen on the day. What are your thoughts on Islamabad United, and do you feel for them? Of course, I think Islamabad have been so unlucky, so unlucky. They, like you said, मेरे लिए भी tournament favorites. I will still give them huge credit कि वो अपनी philosophy में believe करते हैं, वो अपनी mentality नहीं change करते. They attack, they play to win. But my God, they've had a terrible run of injuries. To lose Shadab, to lose Alex Hales to bubble fatigue, to lose Colin Munro. I mean, हमने जब Colin से बात की थी, उसके बाद उन्होंने जो innings खेली थी, he was looking on fire. Sterling का जाना, गुरबाज जो कि उनकी एक एक्चुअल रिप्लेसमेंट थे, बिकॉज इस्लामाबाद हमेशा एक फॉर्मूला के साथ खेलती है, फॉरेन बैटर्स, लोकल बॉलर्स, सारे वो बैट्समैन ही आपके निकल जाना, शदाब का वहां पे ना होना, जिस तरह आपने बताया कि सारे उनके जो मेन प्लेयर्स थे, तो इंजरीज हैव बीन. फहीम एक और प्लेयर जो हमें पता है बिग गेम में परफॉर्म करेंगे, कैन परफॉर्म विद बैट एंड बॉल. तो इट्स इस्लामाबाद हैज बीन सो अनलकी कि मेरा तो दिल honestly चाहता है कि if they're able to get as many of their best players fit, I hope they go on and win it, just because of how unlucky they've been. I really feel for Rehan bhai and Hassan bhai because they've worked really hard to put a really great team together. But you can't, आपको पता ही नहीं होता injuries का, आपको पता ही नहीं होता. And बिल्कुल जैसे आसिफ अली ने बताया, उस दिन तो उनके लिए टीम इकट्ठा करनी बड़ा मुश्किल थी. हमने प्लेयर्स को देखा जो डिफरेंट पोजीशंस में खेल रहे थे, जो नॉर्मली वहां पे नहीं खेलते. वसीम 3 पे जा रहे थे, दानिश को जल्दी खेलना पड़ा. वेरी हार्श ऑन दानिश, हु इज अ मच बेटर मिडिल ऑर्डर प्लेयर. बट लियम डॉसन की परफॉर्मेंस से वो खुश होंगे. आजम ने जो पेशावर के साथ खिलाफ इनिंग्स खेली थी, उससे वो खुश होंगे. आई स्टिल फील कि पेशावर के खिलाफ, नोइंग इस्लामाबाद लाइक आई डू, कि दे आर अ टीम जो मैचअप्स को इस्तेमाल करती है. डिलेंगा को यूज किया जाएगा या मे बी हसन अली को यूज किया जाएगा हारिस के खिलाफ. वसीम की पेस उतनी नहीं है हारिस, और उनकी वो लेंथ उस तरह की नहीं है. तो if inshallah, and I really hope Shadab is fit, because what a PSL he's had, इससे पहले तो 6 गेम्स तक हम कह रहे थे just इसका नाम ही शदाब प्रीमियर लीग रख दो, हम बाकी सारे तो बस यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं. तो उनको नजर लगी. But I hope he gets fit. I hope Munro is fit, because उनका भी बड़ा जबरदस्त impact था. Losing Gurbaz for them will be as tough as losing Rashid Khan is for Lahore. तो इस्लामाबाद के लिए I think इस point पे fitness will be the main concern. पर देखिए बैराम, इस्लामाबाद की एक मेंटालिटी है, इस्लामाबाद की एक अप्रोच है, वो कभी बदलती नहीं. और जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे हमेशा इस्लामाबाद की लगी है कि रेहान और हसन अपने प्लेयर्स को, स्पेशली यंग प्लेयर्स को इनकरेज करते हैं, उनको पुश करते हैं, उनको कहते हैं. उनके पास एक जबरदस्त कोच है अजहर महमूद में. अजू भाई विल बी समवन अगेन वेरी फेमिलियर विद द कंडीशंस. तो इस्लामाबाद इज हैविंग उस तरह का टूर्नामेंट जो लास्ट टाइम मुल्तान का था, एक्सेप्ट मुल्तान के पास इंजरीज इतनी नहीं थी. तो इस्लामाबाद might relish for once that underdog status because they're not used to it. इस्लामाबाद का हम जब सोचते हैं तो we think champions elect, perennial champions or reach the final. 3 साल से फाइनल में नहीं पहुंचा इस्लामाबाद, उनको तंग कर रहा होगा. They won't be happy with it. So maybe in a strange way it works out finishing 4th. उनकी मेंटालिटी तो नहीं चेंज होगी, उनका एटीट्यूड तो नहीं बदलेगा.
वो वहां जाके अटैक करेंगे. अगर आप उनको पहले टू बैट डालेंगे तो वो कोशिश करेंगे 250 करने की, और उनको टू बॉल डालेंगे, उनको 200 भी मारेंगे, they'll believe they can chase it. I think that will always serve Islamabad well. Peshawar start as the favorites, but Islamabad की जो historical mentality है कि they never know till they're beaten, I think वो उनको help करेगी for sure. And I hope they get some of their best players fit again. We'd like to see a close game with all the best players available to them. नहीं, इस बात में काफी वजन है कि given that now they are the clear underdogs, they don't really have anything to lose, so they can go out and express themselves. And having incurred so many losses and so many players to injury, उनको पता है कि उनकी उस लेवल पे तनकीद भी नहीं होनी, because everyone feels for them a bit. So maybe that galvanizes them कि बस जाकर उड़ा दो अगली टीम को, and you do have some players who can individually win you a game in that team. Liam Dawson, we've seen a lot of good stuff from him even in that game versus Multan. शुरू में थोड़ा फंसा दिया था लियम डॉसन ने, एक आधी और विकेट गिर जाती, वहां पे रिजवान गिर जाता, you never know, you might have seen one of those thrilling low scoring games. But that wasn't to be. And then, of course, Azam Khan, we've seen him hit the ball a mile in this tournament. और अभी पेशावर के खिलाफ तो उन्होंने मारा भी था काफी, मेरे ख्याल से उस्मान कादर को, he took him to the cleaners. So he will be licking his lips. And then I think one person who really needs to step up if Islamabad are to qualify for the next qualifier is the captain Asif Ali. Now we all know that Asif Ali is a better player than we've seen on display. I am बीच में उनके we've seen some cameos, but उस तरह उन्होंने किसी गेम में dominate नहीं किया जो एक ही गेम में आसिफ अली ने आपको ना पूरे तौर पे जिता दिया. I think Hassan Ali needs to come back into that team. Form जैसी भी हो, he's a big match player, he's a senior player, तो उनका वहां पे होना confidence और टीम को बकअप करने के लिए बहुत जरूरी है. And they've just got to go with their players and believe in themselves, because there's no other way left. Opening mein, obviously they have massive holes. If Mubassir is opening for you, then that's a major area of concern. Unfortunately, wo kuch kar nahi sakte iska, because they've lost so many players either to bubble fatigue or injury. And then you've got other batsmen just literally filling in the gaps over there, like Danish Aziz in the top order. तो अफसोस होता है, मगर आपकी वाली बात है कि maybe this spurs them on and they're like, let's go out with a bang. अगर जा ही रहे हैं तो entertain कर जाएं, and maybe that works in their favor. और देखिए बेराम, एक और चीज है कि इस्लामाबाद अगर वो हुरैरा से फिर ओपन करते हैं, उनको हम एक मैच पे नहीं जज करेंगे, वो उनको बिलीफ देंगे, वो उनको कहेंगे आप जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, आउट होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो पे आउट होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्चेंट डिलैंगा हैज अ फर्स्ट क्लास 100, आई थिंक, वो तो शायद उसको भी कहते हैं जाओ ओपन कर और भाई बैट को. इस्लामाबाद विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, दे विल नॉट वरी. एंड another great thing is they will not feel sorry for themselves. मैंने इस्लामाबाद को एक एक्सक्यूज बनाते हुए नहीं देखा, मैंने इस्लामाबाद को मोप करते हुए नहीं देखा, उस तरह मायूस नहीं देखा. उनका एटीट्यूड अपबीट है, वो बिलीफ रखते हैं. They're a brilliant side and they're a brilliant franchise, and maybe they're not used to being fourth. मुश्किल से वो भी इस्लामाबाद को नहीं आदत, वो टॉप 2 तो उन्होंने क्या कहते हैं जी, हमने ठेका लिया हुआ है. तो they might not have a problem, and if it worked last time, they might think last time they were dominant, and 8 मैचेस जीतने के बावजूद वो पहले ही अपने जो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस थे वो हार गए. तो मे बी they'll take some heart from it now कि हम जिस तरह भी हैं प्लेऑफ्स में पहुंच गए. क्वेटा will feel a bit hard done by. क्वेटा के इतने करीब कुछ मैचेस थे, तो इस्लामाबाद will not be losing sleep, and I think they'll go into it like you said with उनको कोई डर नहीं होगा. अगर हारेंगे तो हार जाएंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, बट एंटरटेन करके जाएंगे फॉर श्योर. एब्सोल्युटली. आपने बात की हुरैरा की, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो दिस, बट ही हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट रैंप शॉट्स in domestic cricket in Pakistan right now. He's a treat to watch when he's on song. और मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने अपने प्लेयर्स को यही उन्हें लाइसेंस टू थ्रिल दे देना है उनको. And if they are going to go out, they're going to go out all guns blazing and give the people their money's worth. And I hope they do, because that's the sort of those are the sort of traits that we associate with Islamabad. And unfortunate bhi rahe, magar phir ek tarah se Hasan bhai fortunate bhi rahe. Only 4 wins in 10 games yet made the playoffs, just because Quetta were a little more poor due to net run rate. तो क्या पता उनको ये भी चीज हो कि चलो अब किसी तरह पहुंच गए हैं, तो maybe we can make the most out of this. Pound for pound, man for man, they are not as good as Peshawar Zalmi right now. Let's be honest. No. And Peshawar are, yes, they're struggling. But I do hope that they can compete in that game, because इस वक्त तो लग रहा है, to be quite honest with you, that they can't compete anymore. So I hope they find that mojo और कुछ कर दिखाएं, and they can take a lot of heart from this PSL, because the way Shadab Khan was performing, you just know that this franchise is going to do wonders in the future. That is for certain.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड हमने लाइक जिस तरह आपने कहा हमने अभी आसिफ को अपनी बेस्ट पे नहीं देखा, हसन को अपनी बेस्ट पे नहीं देखा, वो दोनों एक मैच में चल गए. You know, Zahid, even if Shadab is available, I'd love to see them play Zahid and Shadab both. Very different players to each other. Who knows? If it's got a wicket, सोचें एक विकेट पे थोड़ी सी टर्न हो, आपके पास जाहिद महमूद भी आ गए, शदाब भी आ गए, हम टीम्स को वहां पे खा जाएं. So can never write Islamabad off. मैं तो आज भी कहता हूं कि वो मुल्तान को खेल रहे हो या किसी और को खेल रहे हो, किसी टूर्नामेंट में हो, इस्लामाबाद इज वन ऑफ दोस टीम्स जो आपको एज अ राइवल फैन स्लीपलेस नाइट्स देती है. यू जस्ट उनका कभी आपको वो हार ही नहीं मानते एंड उनको लाइसेंस टू थ्रिल मिले. Even if they don't make the final, you know, आगे जाते हैं वो जैसे भी जाएंगे वो ऑल द वे थ्रू अपनी क्रिकेट खेलेंगे, अपनी एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, यंगस्टर्स से भरी हुई क्रिकेट खेलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, हुरैरा को, मुबस्सिर को, सबको, दानिश को. वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे एंड दैट्स यू नो मेंटालिटी एंड हॉलमार्क ऑफ चैंपियंस के वो कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं बहाने नहीं बनाता इस्लामाबाद यूनाइटेड. वो जाता है और वो कहता है ठीक है जी हमने जीतना है, हमने खेलना है और वो जीत के लिए खेलेंगे. और जिस तरह हमने यू नो PSL ने खुद कहा है कि जीत से भी आगे दें, तो आई थिंक वो आगे देखेंगे उससे एंड कैन नेवर राइट देम ऑफ एवर. बिल्कुल. और वेरी इंटरेस्टिंग थॉट ओवर देयर प्लेइंग शादाब एंड जाहिद टुगेदर. आई हैव बीन अ बिग जाहिद महमूद फैन. ठीक है कभी कभार रन्स के लिए चले जाते हैं बट ही हैड अ वेरी गुड फर्स्ट गेम फॉर इस्लामाबाद जो हमने उनको देखा इस टीम में आते हुए. I was surprised that he wasn't drafted in the first place by any team because he definitely does have the quality to be at the PSL. मगर चलें अब तो वक्त बताएगा कि this all important eliminator in which you have Peshawar Zalmi who are one-time champions and three-time losers in the finalists, the only team I believe who has always managed to make the playoffs in the PSL versus the two-time champions who are hurting. तो ये तो अब देखते हैं, वक्त बताएगा हसन भाई के रंग जो है जीत का वो लाल होगा या पीला. So we just hope for a cracker and let's just hope that the fans are entertained and the Lahore crowd gets their money's worth. Coming to our last team, and of course you are their biggest fan, a Sultan at heart. The team which has broken the record for any team in the PSL history in the group stage. They've won 9 out of their 10 games. Islamabad ko unhone record tod diya hai. Sirf Lahore se haare hain and they really seem to have all bases covered. जिस तरह रिजवान मुल्तान सुल्तान्स को लीड कर रहे हैं, he is an epitome of hard work and just the way he backs his players और जिस तरह वो calm और composed रहते हैं and he leads from the front. शुरू में उनकी इतनी performance नहीं आ रही थी but now in the last 3 games or so I think he's got 3 consecutive 50s or something and he's literally taken his team over the line. उनके साथ शान मसूद हैं who is also the third highest run getter in this PSL. ठीक है कुछ गेम से फॉर्म ऑफ रहा है but we know that Shan will be wired for this playoff match versus Lahore. Really, I don't think Multan have any weaknesses. You know, Dhani has been going for a few, but he's been taking wickets. David Willey is back. You know, he gets shape off the new ball and then pace off the ball in the death overs. So that's a very useful person to have back in the team. Tim David has been absolutely belligerent. उन्हें तो चीथड़े उड़ा दिए सारों के इस PSL के अंदर. और you know, just to have Riley Rousseau and Tim David come at like 4 and 5, I don't think any team has that luxury. And then you've also got players like Sohaib Maqsood, जिनको आपने as such देखा भी नहीं इस PSL में. This is a team that bats deep, that bats in a destructive manner, and ऊपर से शान और रिजवान जो है वो platform भी set कर देते हैं. And you've got the bowlers. You've got a world-class leg spinner in Imran Tahir. You've got Dhani, who was the best bowler of your last PSL. Muzrabani might not get a game now that David Willey is back, but if he plays, he will be very good. I have no doubt about it. And Asif Afridi. हम बात कर रहे थे किस तरह वो लाहौर लेग में आकर इंप्रेस कर सकते हैं, which he has done, and I'm so happy that he's gotten his moment of fame in the PSL. लग तो नहीं रहा कि मुल्तान को कोई बीट कर सकता है. Like I said earlier, I would have said man for man, pound for pound, I can make an argument कि Lahore and them are on even keel. But now that Lahore have lost Rashid, you just feel like Multan have that extra bit of edge, don't you? You do, and I think one other thing you feel is like you and I spoke about last time. We spoke about in all of our previews. We spoke to Haider Bhai about, and they all said, watch out for Asif Afridi. Don't take Asif Afridi lightly. And you know, अब एक मुल्तान के पास फीलिंग थी बहराम कि वो पावर प्ले में बहुत दफा रन्स कंट्रोल नहीं करते. अब उनको वो बॉलर मिल गए. आसिफ भाई वो रन्स भी कंट्रोल कर रहे हैं. सडनली मुल्तान की एक फीलिंग थी कि खुशदिल आके लेफ्ट आर्म स्पिन करा रहे हैं. अब पोटेंशियली अगर विकेट टर्न ले रही है तो आसिफ अफरीदी भी हैं, खुशदिल भी हैं. डेविड विली का वापस आना बहुत जरूरी था बिकॉज वो कल उन्होंने बैट के साथ भी दिखाया कि ही इज मोर देन केपेबल बैट्समैन जब जरूरत पड़ी. थोड़ा सा रायली के ऊपर कंसर्न आ रहा था. आई नो कल उनकी हल्की सी थंब इंजरी भी थी. उन्होंने जो कोयटा के खिलाफ इनिंग्स खेली, दैट वाज यू नो सो हार्टनिंग टू सी.
उस दिन I'll be honest हम थोड़े से ungrateful हैं as fans, but हमें तो लग रहा था 260 was on the cards the way Riley and Sean and everybody was going. Tim David ने खुद टिम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि I feel I'm yet to hit my best. तो अगर विकेट्स में बाउंस है, विकेट्स में कोई थोड़ी सी जान है, तो आपको पता है कि फिर टिम, राइली, आसिफ अफरीदी कैन बैट. ही इज नॉट अ मग विद द बैट. तो लास्ट टाइम अराउंड जब लाहौर से हारे थे तो फीलिंग थी कि दहानी और इमरान ताहिर के साथ टेल लंबी है तो आसिफ खेल के उसको भी चेंज कर देते हैं. तो बिल्कुल देखें उस तरह से तो लगता है. यू डोंट विन 9 मैचेस इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस आउट ऑफ 10. होपफुली, एंड इफ आई नो देम, देयर इज नो चांस विद रिजवान एंड हैदर भाई एंड दीस गाइस से कंप्लेसेंसी आ जाए. हल्का सा वो डर होता है. थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है. आमिर को मौके मिले हैं, आसिफ को हमने देखा. आई थिंक आसिफ विल प्ले. आई डोंट सी आसिफ बीइंग लेफ्ट आउट. Especially maybe it'll be tough against a side like Lahore because Fakhar Zaman to kha jate hain, but I think they'll back Asif to open in the power play, try something different. तो मुल्तान की उस तरह से तो you're right because they've been lucky, touch wood कि उनको injuries नहीं हुई और problems नहीं हुई. But last time around मुल्तान को had everything to play for. They had to push. This time around, and again मैं ये कहूँगा as a fan, and thank you जब आप कहते हैं सबसे बड़े fan, I think लोग सोचते हैं कि मैं अपने size की वजह से हूँ. बट मैं सारा दिन वही बकवास करता रहता हूँ. आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस, मुल्तान के पास ये जो रिकॉर्ड सेटिंग लीग सीजन गया है, एज अ फैन इट्स जस्ट अ ह्यूज मोमेंट ऑफ प्राइड बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल एफर्ट बाय अ वेरी स्पेशल टीम. हमने ये जबरदस्त चीज देखी है पीएसएल में. अगर हम पुरानी टीम्स में जाएं तो इस्लामाबाद की हमेशा कैमराडरी और उनकी मैनेजमेंट और प्लेयर्स और फैंस के साथ जो एंगेजमेंट थी. Lahore Qalandars this year have stood out for their, like you said, their camaraderie, their bond, the way they engage their fans, the way their management engages, and Multan. So it's lovely to see कि 3 ऐसी environments हैं जो राशिद खान को जाते हुए तकलीफ हो रही है, वो नहीं छोड़ना चाह रहे. डेविड विली is talking about how much he's enjoying it. दुनिया के सबसे बड़े लीग्स में खेलते हैं. इस्लामाबाद के सारे प्लेयर्स को, स्टर्लिंग का दिल नहीं कर रहा जाने को, एलेक्स हेल्स को दिल पे दुख हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ फटीक के बावजूद, मनरो को फीलिंग हो रही है. तो दिस इज ऑल वंडरफुल टू सी. तो मुल्तान विल बी होपिंग, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है बैराम टू सेट अ लेगेसी. डजंट ऑलवेज वर्क आउट, वो डर रहता है एज फैंस, बट आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह कंप्लेसेंट नहीं होंगे. इफ मुल्तान प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट, अगर अपनी सबसे अच्छी गेम खेलते हैं तो यू वुड गिव देम अ बेटर चांस देन मोस्ट अदर टीम्स. दैट्स व्हाट आई विल से. अगर राइट नाउ ऑन पेपर उनके पास लगता है कि अगर वो अपनी बेस्ट गेम खेलते हैं, रिजवान टॉप ऑफ दिस गेम होते हैं, शानी होते हैं, हमने तो अभी जिस तरह आपने कहा सुहेब एंड आसिफ अली, 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो लास्ट टाइम बड़े इंपॉर्टेंट थे. इस दफा हमने उनको देखा नहीं. सुहेब अगर आ गए, एंड माशाल्लाह ही जस्ट हैड हिज फर्स्ट चाइल्ड, ही हैड हिज डॉटर, यू डोंट नो, इट गैल्वनाइजेस हिम. सुहेब भाई आके 2 मैचेस में चल गए, मुल्तान विल बी वेरी डिफिकल्ट सो टू बीट. सो मुल्तान विल बी क्वाइटली कॉन्फिडेंट, बट आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. लाहौर एट होम, डिफरेंट गेम, एंड देन ईदर वन ऑफ an angry Zalmi or a very recovering Islamabad, दोनों को वो लाइट नहीं लेंगे. But हाँ, after winning 9 games, they will feel confident for sure. Absolutely, and I have no doubt in saying that they are a cut above all the other teams in this PSL. Of course, 9 मैच जीतना 10 में से कुछ हल्की बात नहीं होती, और फिर उन्हें हर सिचुएशन में मैच जीत दिया हसन भाई. Like Rizwan has batted first, bowled first. The toss is irrelevant for Multan Sultans. फिर आपको याद है एक मैच में they were only 100 odd after 15 overs, and they smashed what 80 odd in the last 5 to win the game. It was unbelievable hitting. बिल्कुल. तो इस तरह की सिचुएशन से भी उन्होंने मैच जीते. फिर डेविड विली को प्रमोट किया कि कहीं इसकी जरूरत पड़ गई तो इसको थोड़ा टच में ले आओ. All of these things are extremely smart. फिर रिजवान की फील्ड पोजीशंस, the way he just gets everyone going, और जो उसके अपने antics हैं, you know, the way he air hugged Shaheen, it's just, you love to see it. और फिर खुशदिल शाह की तो मैंने अभी पहले बात भी नहीं की थी. What a revelation he has been. ठीक है, मैं खुद क्रिटिसाइज करता था खुशदिल को कि sometimes he really takes a lot of time to get going, and if it doesn't come off, he's like 2 of 8 deliveries and he's out. But this time you've seen him just really go from the first delivery he faces, और आते सारी वो छक्के मारना शुरू कर देते हैं. And he's gotten so many wickets, I think 15 in this PSL, which is staggering. तो मुझे तो कोई इस तरह का बंदा नहीं नजर आ रहा मुल्तान की लाइनअप में जो वीक लिंक हो. एक अनवर अली के कुछ ओवर्स का मुझे हो रहा था, वहां आसिफ अफरीदी ने आकर वो गैप प्लग कर दिया. देन अब्बास अफरीदी हैज बीन सो इंप्रेसिव एज वेल. ही माइट कम बैक इनटू द टीम नाउ. आमिर अजमत के साथ शायद वो ना जाएं बिकॉज अब्बास अफरीदी वाज इंप्रेसिव अर्ली ऑन इन द टूर्नामेंट. तो मुझे तो लग रहा है कि दिस इज रियली मुल्तान्स PSL टू लूज. बट देन अगेन, cricket is very, very funny, and if Lahore manage to beat them,
in that qualifier, फिर pressure तो पड़ जाएगा कि after such a successful tournament, are we going to go out like this, much like Islamabad last year? थोड़ा बहुत pressure तो पड़ेगा उस चीज का. बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और फिर एकदम से आपको ज़ल्मी या इस्लामाबाद में से एक टीम खेलनी पड़ेगी जो कि खुद अपनी एक रन से आ रहे होंगे, तो टाइम नहीं होगा रीग्रुप करने के लिए, सोचने के लिए. बट आप ये भी होप कर सकते हो कि अगर लाहौर से हार के लाहौर फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर द मोटिवेशन टू बीट वन ऑफ ज़ल्मी और इस्लामाबाद एंड देन गो बैक टू फेस लाहौर इन द फाइनल could be very high. But Multan will be hoping to avoid that. उनकी कोशिश होगी कि यार, बिकॉज देखें लाहौर एक ऐसी टीम है इस टाइम पे जिसको कोई फाइनल में नहीं खेलना चाहेगा. लाहौर कलंदर्स बट लाहौर कलंदर्स इन लाहौर इन अ फाइनल एट गद्दाफी स्टेडियम विद दिस बैकिंग, और हम जितने मुल्तानी इकट्ठे हो जाएं, हम स्टेडियम में चले जाएं, अगर स्टेडियम में सिर्फ 500 लाहौरी भी होंगे, दे विल आउट सिंग, आउट चांट एंड आउट एटमॉस्फेयर ऑल ऑफ अस. द लाहौरीज आर अमेजिंग. द क्राउड इन लाहौर इज एक्सेप्शनल. तो वो आपको एक डर होगा कि यार ये एडवांटेज आने ही ना दो ना, वो 12th मैन वाली सिचुएशन होने ही ना दो. और बहुत ऑन होंगे लाहौर के फैंस सोशल मीडिया पे, ग्राउंड में, शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में. तो मुल्तान सोच रहा होगा कि यार वो हमने बार बार वही हम बात पे आ जाते हैं राशिद भाई की लाका दामार, यू नो, तो यू विल बी थिंकिंग कि यार इसका सर काट दो यहीं पे ताकि आगे वो ऑप्शन आई ना. बट बिल्कुल अगर आई थिंक अगर ना जीत सके तो फिर वो डाउट्स क्रीप इन करना शुरू हो जाते हैं. वो बैक, आई थिंक जो इस्लामाबाद के साथ हुआ था लास्ट टाइम, इतने जब आप डोमिनेंट होते हैं, इस्लामाबाद में लास्ट टाइम जब 8 जीता था तो एक मैच आखिरी ओवर में हारा था, दूसरा मैच भी आई थिंक उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स रेस्ट किए थे. तो शायद उनके वो डिफीट से उनको हैरानगी होगी थी कि हम कैसे हार गए, यू नो, हाउ डिड वी लूज टू पेशावर. तो वो डर होगा मुल्तान को. बट आई एम कॉन्फिडेंट, quietly confident in Rizwan Lala, in Haider Bhai, in all, you know, Andy Flowers back, Mushi Bhai, Otis, all the senior players, Shani, कि they will tell the guys कि यार don't think too much, do what you've been doing. 2 और गेम्स हैं, because देखें आपके पास बहराम बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती. You have a chance to set a legacy, you know, to be the first team to defend the PSL is something nobody else can ever do again, if unless somebody else इस दफा जीतते हैं, पेशावर या इस्लामाबाद या लाहौर जीता, तो फिर उनको अगले साल मौका मिलेगा. तो मुल्तान का कोर भी स्ट्रांग है. इट्स हिस्ट्री इज देयर फॉर द मेकिंग, एंड आई होप दैट जस्ट लाइक दे मेड हिस्ट्री इन द लीग, दे कैन मेक हिस्ट्री इन द नॉकआउट्स एज वेल. चले, I wish the best of luck to you, हसन भाई. As a fan, of course, data driven team है, और अकेली ऐसी टीम है हसन भाई जिसका इस पूरे PSL के अंदर कॉम्बिनेशन खराब नहीं हुआ है सच, क्योंकि every other team has lost players. लाहौर के साथ नहीं हुआ था, but now they've lost Rashid Khan. So Multan do have that edge, but I agree with you. They'll really want to win that qualifier versus Lahore and go directly into the final and chop that snake's head off right over there. क्योंकि like you said, लाहौर को फाइनल में खेलना बहुत ट्रिकी साबित हो सकता है, और फिर अगर आप वो वाला मैच हार जाओ तो दूसरी टीम के पास मोमेंटम होता है जो एलिमिनेटर जीत कर आ रही होती है. They are on a high, and how often have we seen the 3 or 4 place team win the PSL? तो वो भी एक रिस्क आ जाता है उसके अंदर. I don't think Multan will mess this up. I have them as early favorites to win the whole thing, but you never know. कुछ कहा नहीं जा सकता, और यही क्रिकेट और T20 क्रिकेट खास तौर पे उसकी खूबसूरती है कि the best team does not always win. Multan will be hoping to prove that notion wrong, and they definitely have all what it takes in their arsenal to go and become that first team to defend a PSL title. इंशाल्लाह, let's hope they do. But वही बात होगी बहराम के आप चारों टीमों में से किसी को काउंट आउट नहीं कर सकते, ना इस्लामाबाद को, ना पेशावर को, लाहौर कलंदर्स को, स्पेशली लाहौर कलंदर्स को. तो हाउ वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके पास PSL में इतनी क्वालिटी है. और आप अगर इन चारों टीमों को देखें तो आपके पास यहाँ पे पाकिस्तानी कैप्टन हैं, पास्ट प्लेयर्स या करंट प्लेयर्स, 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कैप्टन है, एक विकेट कीपर कैप्टन है, एक ऑलराउंडर कैप्टन है. ऑलराउंडर नहीं है तो पाकिस्तान के बैट्समैन है. सारे टीम्स में यंग पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं. हम यूथ को प्रमोट होते हुए देख रहे हैं. दिस इज ऑल वी एवर वांटेड फ्रॉम PSL. वी वांटेड टू फाइंड हारिस एंड जमान. वी वांटेड क्राउड्स फुल लाइक दे आर इन गद्दाफी स्टेडियम. हमें हमारे ख्वाब थे कि यू नो आसिफ अफरीदी जैसे डोमेस्टिक स्टॉलवर्ड्स को ये मौके मिलेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गॉन टू प्लान, एंड इंशाल्लाह दिस नेक्स्ट 2-3 गेम्स आल्सो इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से जाए. एज पाकिस्तानी फैन स्पेशली, आई नो आप किस तरह डायस्पोरा के फैंस जो हैं इतनी सुबह सुबह इंसेन घंटों पे उठ के पूरे मैचेस देखते हैं. तो इवन फॉर यू, आपके लिए कितना हार्टनिंग होगा टू सी कि यार सारा कुछ जिसकी हम दुआ करते हैं कि हमारे यंग प्लेयर्स निकले, हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स परफॉर्म करें. ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रही है हमारी, पाकिस्तान होम पे क्रिकेट खेले, स्टेडियम फुल हो, यू नो, दैट्स ऑल वी कैन आस्क फॉर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैड ऑल ऑफ इट.
Absolutely. और मैं तो एक बार बार कहता हूँ जब भी मुझसे कोई पूछता है कि which team do I support and I am from Islamabad and I enjoy when they win, मगर जो PSL की एक वो feel है ना, it's just like one big giant hug. I don't care about Pakistani cities competing against each other. I want to see full stadiums, my best players performing, and I want to see tight games. I don't want to see one-sided games. I want to see nail biters. एंड आई होप दैट ये जो रिमेनिंग प्ले ऑफ गेम सारी रह गई हैं, एक से बढ़ के एक नेल बाइटर इसमें हमें मिले। और मुल्तान, एक और मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा हसन भाई, आई थिंक जो कामिंग इन्फ्लुएंस है ना इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, in Rizwan, in Shan Masood, in Imran Tahir, and all of those other senior players like Riley Rousseau. He's a veteran now in the PSL. He's pretty much been there every season. Then you've got management, जिसमें आपके पास Andy Flower, one of the most sought after coaches in the whole world. You've got Otis Gibson, जिनके पास इतना ज़्यादा experience है. Mushtaq Ahmed, who has also traveled the world coaching different teams, whether it be Pakistan, England, West Indies. The experience and the calming influence, and then the performances जो इनने खुद किए हैं, that will give them a lot of confidence, and that's my rationale for having them as early favorites. But you never know. You never know with the Qalandars, because एक तरफ मैं calming influence की बात कर रहा हूँ, and दूसरी तरफ you have this rock and roll brand of cricket in which they're just ruthless and they're riding that wave of infectious energy. Absolutely. और बहरान इसमें मैं एक और नाम ऐड करूंगा ऑफ अब्दुल रहमान. अब्दुल रहमान एज अ डोमेस्टिक कोच सब जीते हैं पिछले 2 सालों से. He's just winning trophies for fun. एज ग्रुप्स पे जीतते हैं. सच ए ब्रिलियंट इन्फ्लुएंस. देखें, आपने जो नसीम शाह में इंप्रूवमेंट देखी है, आपने जो खुशदिल में इंप्रूवमेंट देखी है, इस सब में सर अब्दुल रहमान का बहुत बड़ा हाथ है. एंड काम इन्फ्लुएंस, उनसे ज्यादा काम तो कोई होता ही नहीं. उनको तो लगता है कि स्ट्रेस ही नहीं हो रही. उनको कभी कभी पूछना पड़ता है कि सर आपको स्ट्रेस हो रही है. वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस एंड समवन जिनका माइंडसेट टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि वो प्लेयर्स को उनकी वीकनेसेस पे काम करते हैं. उन्होंने खुशदिल को ट्रांसफॉर्म कर दिया. ऑफ कोर्स आल्सो बीइंग फ्रॉम साउथ पंजाब, being associated with the Cricket Association, we're very proud of the performance Khushdil is putting out, Naseem is putting out. What a change Naseem has had this season for Quetta as a T20 bowler. तो वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन है कि एक सर अब्दुल रहमान जैसा कोच is working with Otis Gibson, is working with Andy Flower and learning and improving so much कि I really hope कि फ्यूचर में हमें उनका मौका मिले उनको नेशनल टीम के साथ देखने का, बिकॉज हमारे कोचेस भी इंप्रूव हो रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट जो इंप्रूव हो रहे हैं, हमारे एनालिस्ट इंप्रूव हो रहे हैं. तो वही तो हम पीएसएल से दुआ मांगते हैं बहराम कि हमें मौका मिले इंप्रूव होने का. एंड ऑनेस्टली विदाउट गेटिंग इनटू दोस डिबेट्स जो लोगों को बड़ी शौकीन होती है कि जी फलां, कंपैरिजन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारा अपना प्रोडक्ट, और आपने जिस तरह कहा कि पीएसएल इज वन बिग जायंट हग. इस वक्त पूरा मुल्क इतने इत्तेहाद में, इतना यूनाइटेड है कि हमें किसी और टाइम पे नहीं मिलता. आई नो हमारे शुगल वगैरह चल रहे होते हैं, झुकते चल रही होती है सोशल मीडिया पे, बट हमें जेन्युइनली ऑल हैप्पी कि हमें ये नजर टूर्नामेंट मिले. तो इट्स लिफ्टेड द स्पिरिट्स इन पाकिस्तान. यू नो, आप यहाँ पे थे, आपने उस टाइम पे भी देखा, आप वहां पे हैं, अब मुल्क से बाहर हैं, आप देखते हैं. तो दैट्स ऑल वी कैन आस्क फॉर. आवर प्लेयर्स, आवर कोचेस, आवर फैंस गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज. एंड बिल्कुल लाहौर विद देयर रॉक एंड रोल ब्रांड, इस्लामाबाद, यू नो, द वुंडेड टाइगर, Peshawar, I want to say the angry lion, you know, who's feeling hard done by. Multan, you know, the old lion who's been heading the pride for a very long time and can't get comfortable. So हर जगह से जिस तरह आप देखो, ये सारी टीमें जबरदस्त हैं. Honestly, I think any 4 of them. हम बड़ी दफा कहते हैं कि नहीं यार वो 2 तो कमजोर ही हैं. मुझे even with injuries और absences, किसी जो टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, Islamabad United, Peshawar Zalmi, Lahore Qalandars, Multan Sultans, each of them would be deserving winners, and I think each of them are very possible winners. That's brilliant to see. And that is the beauty of the PSL ultimately. जिस तरह ये unite करके रखता है सारे पाकिस्तानियों को, and nothing quite unites Pakistanis like cricket in the first place, whether that be the PSL or the national team. तो उम्मीद है, दुआ है हमारी कि ये brand इससे और बेहतर होता जाए. I would like to see in the coming years कि players जो हैं वो end तक रुकें. थोड़ा मजा खराब हो जाता है, so I would definitely hope that they do some work over there. Magar again, we hope for crackers in these final few days of the PSL. It's been a great tournament. Just before we leave, Hassan bhai, before I conclude things, early prediction for the finalists? Heart says Multan Sultans and Lahore Qalandars. Head says Multan Sultans and Lahore Qalandars. I think these two, one way or another, will find it a way to make it a final. And boy, it's going to be very stressful, and also it's going to be very amazing. I think these two are the early prediction.
Yeah, I think for me, heart and mind is saying Multan Sultans versus Lahore Qalandars. और एक sorry मैं बात करना भूल गया आपने अब्दुल रहमान की बारे में, अब्दुल रहमान साहब की बारे में बात कर. I'm glad you brought that up because I had completely forgotten. और मेरे ख्याल से अब क्योंकि उन्होंने एंडी फ्लावर और ओटिस गिब्सन के साथ काम कर लिया और मुश्ताक अहमद, तो हम अभी से सारी टाइटल्स देते हैं केपी को. बिल्कुल बिल्कुल अभी से, बिकॉज वो तो अगले साल तो आई थिंक उनको अब गुस्सा चढ़ा होगा कि अगले साल तो अनबीटन जाके सारे टाइटल जीतने का प्लान बना रहे होंगे. इवन बैराम अंडर एज क्रिकेट पे भी, एज क्रिकेट में भी वो सारा कुछ जीत गए, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा. इतनी सर से बात करनी पड़ेगी, दैट्स अ लॉट ऑफ ग्रीड. कुछ तो जीतने दे सर किसी और को. बिल्कुल. एंड दैट कंक्लूड्स द शो. उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया होगा मेरी और हसन भाई की ये गुफ्तगू सुनते वक्त. और प्लीज लेट अस नो आपको क्या लगता है, कौन फाइनलिस्ट होंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हसन भाई. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू डू अ शो विद यू. Always a pleasure, Bahram. You bring such amazing energy and so much excitement to everything. You know, I think one of the best things about this PSL has been interacting with you, and you're a breath of fresh air. It's lovely to see. It's always a pleasure. As always, yep, it's amazing working with you as well, and I'm so grateful for this opportunity. चले, that'll be all from us, ladies and gentlemen. आपको फिर हम शायद थोड़ी देर बाद मिलें, शायद फाइनल से पहले एक शो कर लें. We'll see, but till then, you enjoy yourselves, enjoy the PSL. खुदा हाफिज. शॉट और कैच आउट हो गए.